So as you have seen in the oscillatory motion, that that is nothing but to and fro motion, and that follow that force equation, that is k x to the power n, and n can take only odd integer, right? On 3, 5 and so on. Okay, so इस तरह की मोशन है जहाँ पार्टिकल हमेशा एक पार्टिकुलर पोजीशन की तरह जाना चाहते हैं, दैट इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? In equilibrium point, that force is 0 and velocity will be maximum, acceleration will be 0. Okay, and then we have started discussion on simple harmonic motion. The simple harmonic motion means is the simplest case of oscillatory motion. It means when we'll take that n value on, it's the simplest case, right? It means that all simple harmonic motion belongs to oscillatory motion, but all oscillatory motion are not belong to simple harmonic motion. Then you have seen that differential equation, solution, and velocity formula, kinetic energy and potential energy. And you have noticed that at extreme position, the velocity will be 0, but acceleration will be maximum. But at the mean position, that velocity of the particle in simple harmonic motion will be maximum, but acceleration will be 0. And same is true for kinetic energy also. Kinetic energy will be maximum at the mean position, but it will be 0 at extreme point. And potential energy will be maximum at extreme point because it is proportional to x square. X is the displacement, and it is 0 at the mean position. Then we have seen that total energy of the body in simple harmonic motion, that will be half m omega square a square, and that will be constant irrespective of position and time. That will always be half m omega square a square, right? So if you have seen that you have a kinetic energy in simple harmonic motion, that is half m omega square, and then you have v square, right? And potential energy v can be written as half m omega square, and you have x square, right? So if you plot them with respect to position, right, you have a position, and if you plot, so how that potential energy will look like? So it will be looking like this. At mean position, it will be 0, and at extreme position, let us take that amplitude of oscillation, that is a. So at extreme position, it will be. So what is written in kinetic energy? Kinetic energy half m omega, sorry, this will be half m v square, right? So half m omega square. In terms of omega square also you can write, or simply you can write half m v square, right? Sir, sometimes your voice is breaking. Is it? Sometimes. Yes, sir. Connection is not stable. Oh, I think there will be problem of internet. Now is it clear or breaking still? Sir, video is also lagging. Yes. It is Yes, sir. Go to line, sir. 1 minute. Actually, there will be internet issue maybe a bit, because that will be that may be problems. तो बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? अभी तो ठीक है सर, एक्चुअली सर ठीक है सर, अब ठीक है। Sometimes a little. करते हैं अगर बहुत Sir, when you speak, your voice travels late and video means थोड़ा जल्दी स्पीड हो जाती है। हाँ, जहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम होगा ना, प्लीज वहाँ पे स्टॉप कीजिए, फिर मेरे को रिपीट करने के लिए कह दीजिए ना, क्योंकि मैं रूम से ले रहा हूँ, Okay, यहाँ sir. पे मेरा कनेक्शन करने का कोई ये नहीं है, वायर नहीं है, चल भी प्रॉब्लम, इंटरनेट इशू हो सकते हैं। 1-2 दिन की बात है, फिर इंस्टीट्यूट से शुरू हो जाएगा, उस टाइम प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ठीक है, तो आपका जो, हाँ जी बोलिए जी। Sir, what reference book we should read for this topic, sir? Oscillatory motion, I'll share you that book, okay, soft copy I'll share you. As on book from Gupta, I'll share you that book, okay, and that after lecture I'll share, you go through that. Sir, what is the graph you have sir, drawn? I'm drawing that graph. You have a along this side you have a displacement. Along this side you have a displacement, and this side you have a energy. So this is the plot of what? किसका plot है जी?
Parabolic. potential energy. This is the plot of potential energy. It will be 0 at mean position and it will be maximum at extreme position, right? But if you plot that, Sir, the plot is parabolic in nature exactly. because Ah. because here it is x square present in potential expression, but you have drawn straight line. It's not like a straight line, G. It's like a parabola. है ना? Exactly straight line नहीं है, parabola type का. Okay, sir. It's not a straight line. It will be parabola. And then you have a अगर आप kinetic energy को draw करोगे, फिर किस तरह का आएगा बताइए? अगर याद हो, kinetic energy को Inverted parabola. It will Inverted be parabola. exactly half m omega square. Then it will be what? It will be, if you take amplitude, it will be a square minus x square, right? So at x it will be maximum, and it means at mean position it will be maximum, but at extreme position it will be 0. So it will be inverted parabola. It will be like that. ठीक है ना? But if you sum them at any position, if you sum them, what will happen? We sum at any position sum of the kinetic energy and potential energy. It will be how much? It will always be half m omega square a square. It's not straight line. This will be parabola. It's not straight line. Okay. So sum, irrespective of any position, wherever oscillator is, the sum of the total sum of the kinetic energy and potential energy, that will always be half m omega square a square. That is conserved. Okay. Now, if I ask you to calculate the time average of potential energy for on complete cycle, if I ask you to calculate the time average of potential energy for on complete cycle, so if you remember, आपको याद है जो solution होती है, x क्या होती है? General solution simple harmonic motion के लिए. A cos omega t. You can take a sin omega t as sin omega t plus phi also. You can take phi 0 also. This will be the general case. A sin omega t plus phi. This is the general solution of simple harmonic motion. You can take cos also, not problem, because as you have seen, for any simple harmonic motion, that acceleration should be proportional to displacement. That is the criteria to check the solution, right? You can take here cosine also, you can take sine also. Okay, so I have taken a sin omega t plus phi. Now, if I this is the general solution. Now, if I calculate the time average of potential energy for on complete cycle. So for on complete cycle कैसे calculate करेंगे जी? बताइए. X square. हाँ, जैसे आप कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं? कोई सपोज मान लीजिए कोई फंक्शन है, इसका टाइम एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं जी आप? Integration 0 to t Integration of function into t t divided by integration of 0 to t dt. Same I'll apply here. So if I apply it, how much I'll get? So you'll have v dt for 0 to capital T, right? And then you have our 0 to t dt. अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, बताइए जरा, आप लोग ट्राई कीजिए इसको. इफ यू ट्राई इट, तो यहाँ पोटेंशियल है ना? हाँ जी, पोटेंशियल अभी मैंने बताया ना, कोई भी फंक्शन का अगर आप टाइम एवरेज निकाल लेंगे, सपोज एफ इज ए फंक्शन है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, तो उसका जब टाइम एवरेज निकाल लेंगे तो फिर क्या करेंगे? एफ डी टी. सो वी डी टी ओवर कंप्लीट साइकिल 0 to t and then divide by 0 to 2 dt. So if you now if you substitute that v here, so how much v is actually? So you'll have a half m. Sir, the formula is not visible. Which formula is not visible? This formula? Yes, sir. So I'm telling you 0 to capital T. T is the time period, because you are calculating time that average potential energy over a complete cycle. Complete cycle means on complete cycle के लिए time कितना लगता है? Capital T लगता है time period. So 0 to capital T, V is the potential dt over 0 to capital T dt. Is it clear now? हाँ, नीचे क्या है? 0 to capital T dt. So you have half m omega square. 1/4 m omega square is square. k square, sir. Exactly. So then you have 0 to t, and then क्या जाएगा जी? We'll have a square sin square omega t plus phi dt over 0 to t dt. है ना जी?
So you can take a square also come outside. So half m omega square. Then you have a square, and then इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 to capital T sin square omega t plus phi or theta, whatever it is. I have taken phi, so it will be phi dt divided by 0 to t dt. अब बताइए इसका वैल्यू कितना आता है? साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना है जी? हाफ. ये हमेशा कितना आता है? वेदर इट इज साइन स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर, हमेशा कितना आता है जी? हमेशा हाफ. You can try also. It's very trivial. You will always get कोई भी साइन स्क्वायर फंक्शन है या कोसाइन स्क्वायर का फंक्शन का टाइम एवरेज एवरेज वैल्यू निकालेंगे ओवर ए कंप्लीट साइकिल, आपको हमेशा कितना मिलेगा? हमेशा आपको हाफ मिलेगा, है ना? आप ट्राई भी कर सकते हो, वेरी ट्रिवियल. सो यू विल गेट हाफ. सो यू विल हैव टाइम एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओवर ए कंप्लीट साइकिल, दैट विल बी हाफ into 1/2, that will be 1/4 m omega square a square. So this is the time average of potential energy. Okay. ठीक है जी. yes, अब तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है जी? इंटरनेट इशू अभी स्टेबल है? Everything is Okay, okay. Now you can also calculate that time average of kinetic energy over a complete cycle. So same I'll apply. So 0 to capital T, then kinetic energy कितना आता है जी? यहाँ पे T लिखना पड़ेगा. That is half, how much? Half m omega square. Then how much? A square. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको अगर याद हो तो? A square minus S square. हाँ, x square कितना लिया था आपने? आपको याद है? A cos A sin omega plus phi. If you remember, you have exactly. So x is nothing but a sine of omega t plus phi. So half m omega square, then a square minus x square, then dt divided by 0 to t dt. और x की जगह पे अगर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, so you'll have a square sin square omega t, and then you'll get a square common, right? यहाँ पे अगर x square सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, a square sin square omega t plus phi, and then you will have a square common आ जाएगा, right? a square यहाँ पे भी a square आ जाएगा, 1 minus sin square, that will be how much? क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए जी? आपका सिंपली a square बाहर आ जाएगा और you will have 1 minus sin square omega t cos square omega t plus phi. exactly cos square omega t plus phi dt. ठीक है जी. और फिर आप कांस्टेंट को बाहर लेके आइए, 1/2 m omega square a square, and then you have 0 to capital T cosine square omega t plus phi dt over 0 to t dt. ठीक है. अगेन ये वैल्यू कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा 1/2. ये आप ट्राई एक बार कीजिएगा, है ना? ये आपका फिर मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आ जाएगा ये सब चीजें. एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा ना. बहुत ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना? एक बार प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है? वेदर इट इज साइन स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर, आपको हमेशा इसका जो टाइम एवरेज वैल्यू होगा ओवर ए कंप्लीट साइकिल, दैट विल ऑलवेज गेट हाफ. ठीक है जी. Okay, sir. So again you will have half into half, that will be 1/4 m omega square, and then you have a square. So this is the time average of potential energy. Okay, so someone is asking he or she cannot understand Hindi. So tell me if you have any doubt, whatever discussion so far done. If you have any problem, please tell me, then I can again repeat that. Can you please tell me? Extremely sorry, somewhere I have used that Hindi. If you have problem, please tell me, then I can repeat that. Otherwise, I will proceed. Okay, sir. You have any problem? Whatever discuss we have done so much. Till now. No, sir. I'll ask you if I have any doubt. Please ask me. Okay. Now we'll solve another beautiful problem from simple harmonic motion. Then we'll proceed further. So suppose कोई एक particle है, suppose a particle is executing simple harmonic motion. It is executing simple harmonic motion, or
the time period of oscillation is T, angular frequency is omega. Okay, and amplitude is A. You have a particle that is executing simple harmonic motion, and time period is capital T, omega is the angular frequency, capital A is the amplitude. And it is given that, so you have this is your mean position. Okay, this is your mean position, and this is the extreme position. When the particle is at x equals to 2a by 3, when the particle is at x equals to 2a by 3, you have a particle at x equals to 2a by 3. There is a sudden force from external source. Okay, it is executing simple harmonic motion. There is a sudden force from external source, and that force makes the speed of the particle that is 3 times. Suppose initially, जब आपका कोई force नहीं लग रहा था, ऐसे particle simple harmonic, the particle is executing simple harmonic motion, and when there is no force acting on the body at x equals to 2a by 3, the velocity is vi. Now there is sudden thrust on this body executing simple harmonic motion, and that makes the speed of the particle 3 times initial speed. And again, that particle is executing simple harmonic motion without changing time period. Now we have to tell what will be the amplitude of oscillation after applying this force. Again, I'm repeating. You have a particle executing simple harmonic motion. When the particle is at x equals to 2a by 3, the velocity is vi. Now there's a sudden thrust on this body, and that makes the velocity 3 times initial velocity without changing time period. So you have to tell that what is the new amplitude. Tell me. सर वीडियो रुक रही है. Please again tell. Okay. I'm repeating. Okay. So you have a particle that is executing simple harmonic motion. Okay. T is the time period, A is the amplitude, and omega is the angular frequency. Okay. When the particle is at x equals to 2a by 3 from mean position, the speed or the velocity of the particle is vi. Now there is a sudden thrust on the body, and that makes the velocity of the particle at the same position but 3 times the initial velocity. Even after applying this thrust, the particle is executing simple harmonic motion without changing time period. But you have to tell that amplitude, new amplitude of oscillation in terms of previous amplitude. So it comes out 7a by 3. Oh, great, very good. इतना जल्दी कर लिया आपने. Very good. Just comparing the two v equal to omega into s square. Okay, great. You will get 7a by 3. So let us solve it. So is it clear? पहले आपका the body was executing simple harmonic motion, so you can basically define vi. Vi means what? So basically, you know the velocity of the particle undergoing simple harmonic motion at a displacement x, that can be written as what? Omega. That will be what? Plus minus omega. Then you have a square minus x square. Now it is given at x equals to 2a by 3. The velocity is given. Vi is how much? That is plus minus omega, and then you will have a square minus 2a by 3 ka square. Okay. So this is the case. अब सेकंड कंडीशन क्या है? इसी पोजीशन में बॉडी का वेलोसिटी कितना है? इसी पोजीशन में जब आपका एक्सटर्नल फोर्स के कारण बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया? 3 times vi. 3 vi. And again body is executing simple harmonic motion with same time period. का मतलब क्या है? Angular frequency भी same रहेगा. यानी basically you can represent that if I tell after applying that force, let us assume the velocity at this position, let us assume that velocity is vf. So I can basically represent that vf. Can you please tell me what will the vf? vf को आप किस वे में represent कर सकते हो? Into I can I can represent like this, plus minus omega, a square then minus s square. f square minus 2a by 3 ka square. And that will be what? 3 times vi according to the given condition. Now I'll substitute that value.
3 times vi. So vi is you know, so you have plus minus 3, then omega square root of a square minus 2a by 3 ka square, right? So omega will be cancelled from here. Now if you square both sides, what will happen? We'll have f square minus 2a by 3 ka square. That will be how much? 9a square minus, है ना? You'll have what? 9, then a square minus 4a square by 9, right? So we'll have f square minus 4a square by 9. That will be equals to how much? If you multiply 9, so you'll have 9a square minus 4a square, right? Because this 9 will be cancelled. So we'll have 9a square minus 4a square. That will be nothing but 5a square. It means that f can be written as, kitna aa jayega? You'll have 5a square plus 4a square by 9. And that will be how much? 9 into 5, 45 plus 4, 49 a square by 9. And that will be how much? So this is your f square. So f will be how much? That will be 7 a by. So this is the new amplitude of oscillation when that velocity at position 2a by 3, that becomes 3 times initial velocity. Plus or minus आएगा ना? You can take plus minus. Then in the positive extreme position, that will be 7 by 3, and negative minus 7 by 3. Okay. Is it clear? कोई doubt है जी? बताइए. If it is clear, then we can proceed for next. सर हाँ जी बोलिए. आफ्टर उसने ये बोला कि फोर्स लगाने के बाद जो एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड कह रहा हूँ, जो एंगुलर जो वेलोसिटी वगैरह उसमें सेम रहेगा, उसने ये बोला है सर. हाँ, इसमें वो गिवन है कि टाइम पीरियड जो है दैट इज सेम. तो टाइम पीरियड जब सेम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा. ओके सर. ठीक है. Okay. So as you know that your spring block system that can also undergo simple harmonic motion. Are you familiar with? You are familiar with this, right? You have a spring block system that can also undergo simple harmonic motion. Everybody knows, right? Is it clear that if you have a this is your spring block system, if you disturb this block, if you stretch by an amount x, then it will undergo simple harmonic motion. Okay. But thing is that so your spring suppose is a spring having spring constant k. So spring is one of the example of simple harmonic motion. आपको पता है कि कोई सपोज मान लीजिए कोई स्प्रिंग है और उसको x अमाउंट स्ट्रेच करना है, तो x अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है? अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो आपके x स्क्वायर, that will be half k x square. That is known, right? So if you have a spring, if you stretch by an amount x, the amount of work to be done, that will be half k x square, and that will be the potential energy stored in the spring. Now आपके पास एक क्वेश्चन है ना, ये आपका जेस्ट पे आया था कि सपोज मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और उसको x अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़े. यहाँ पे दो स्प्रिंग का ये है कंडीशन गिवन है कि एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है k और उसको कितना स्ट्रेच कर रहे हो? x स्ट्रेच कर रहे हो. दूसरा आपका एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ k की फॉर्म में, ठीक है, और उसको x/2 अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? इसका द्विगुना वर्क डन करना पड़ रहा है. You have a spring having spring constant k, the amount of stretching that is x, है ना. और दूसरा आपका एक
स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस स्प्रिंग, है ना। उसको x/2 स्ट्रेच करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज 2 टाइम्स दिस। तो आपको निकालना है k प्राइम इन टर्म्स ऑफ k की फॉर्म में निकालनी है। ये आपका जेस्ट पे आया था। क्या क्वेश्चन क्लियर है कि इसको x/2 स्ट्रेच करने के लिए इससे द्विगुना वर्क करना पड़ रहा है। You have to calculate k prime in terms of k. Can you able to calculate? क्या एक क्वेश्चन क्लियर है जी? Is it clear question? So you have a first spring having spring constant k, the amount of stretching is how much? x. दूसरा है कि आपका स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k प्राइम है, उसको x/2 अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए प्रीवियस स्प्रिंग से द्विगुना वर्क डन करना पड़ रहा है। So you have to calculate k prime in terms of k. That you have to calculate. Sir 8k. Exactly, it will be 8k. So as you know कि इसका वर्क डन कितना करना पड़ेगा? That will be k/2 x square. Yes sir, 8k. हाँ, इसका वर्क डन कितना करना पड़ेगा? That will be k prime by 2 then x/2 का स्क्वायर। और एक गिवन है कि दूसरे का वर्क डन कितना है? That is 2 टाइम्स पहले का, right? Now just substitute that value k prime by 2 x/2 का स्क्वायर, that will be 2 into k/2 x square। ठीक है, so then x square will be cancelled, ठीक है ना जी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 4 and you have a 2, so that will be 8, right? And so k prime by 8, that will be equals to k, which implies that k prime equals to 8k. ठीक है, k prime equals to how much? 8k. So spring block system is one of the example of simple harmonic motion. Now suppose मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका लेंथ सपोज मान लीजिए l। ठीक है, स्प्रिंग को आपने 3 पार्ट में डिवाइड किए हो, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हो, और हर एक का लेंथ कितना है? l/3 है। अब आपको इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताना पड़ेगा। So spring having length l, now you have divided that spring into 3 equal parts. So you have to tell that spring constant of new spring. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k है। बताइए जरा कितना होता है? k/3. It will be k/3. k/3. इसका k/3 आ जाएगा। अब जरा बताइए, कोई छोटा स्प्रिंग है उसको एक अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, या कोई बड़ा स्प्रिंग है उसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा? छोटे वाले में थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ना। सपोज मान लीजिए आपका हाफ के x स्क्वायर होता है, राइट? अगर एक छोटा स्प्रिंग को एक अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, या बड़ा है को उसको एक अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। Sir, I can't understand. What I'm saying, you have a spring, you have a spring having spring constant k, length is l. Now you are dividing this spring into 3 equal parts. तो हर एक का लेंथ कितना हो जाएगा इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो? l/3. Now you have to tell that spring constant of these 3 parts in terms of k. तो आपको पता है कि सपोज मान लीजिए कोई एक आपका स्प्रिंग है, कोई बड़ा स्प्रिंग है, उसको x अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है? हाफ kx स्क्वायर। कितना वर्क डन करना पड़ता है? हाफ k। आप खुद ही सोचिए कि एक बड़ा स्प्रिंग है उसको x अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, या कोई छोटा स्प्रिंग है उसको x अमाउंट स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा? तो छोटे स्प्रिंग को x अमाउंट करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। एंड वर्क डन क्या होता है? वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड है? जब आपका स्ट्रेचिंग सेम है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा जी? स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो छोटा का ज्यादा होगा या बड़ा का स्प्रिंग का ज्यादा होगा? तो छोटा ना सर, छोटा का ज्यादा होगा। बेसिकली जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ए सेम टाइप ऑफ मटेरियल,
For a same type of material, spring constant K is actually what? It is inversely proportional to length. It is inversely proportional to length. कैसे सोचोगे? आपके पास सेम मटेरियल का स्प्रिंग है, एक छोटा स्प्रिंग है, एक बड़ा स्प्रिंग है, दोनों को इक्वल स्ट्रेचिंग करने के लिए छोटा के लिए आपको ऑब्वियसली ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब सेम स्ट्रेचिंग है तो वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड है जी? दैट इज डिपेंड्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ज्यादा वर्क डन इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि छोटा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो बेसिकली इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा हर एक का, बताओ? 3/L. Sir, why K is inversely proportional to 1/A, proportional to length? K2 divided by K1 plus K2. Why spring constant is inversely proportional to length? Why? That's what I'm saying ना. That depends upon, I mean, आप खुद ही सोचो ना कि आपके पास सपोज मान लीजिए एक ही मटेरियल की बात कर रहा हूँ, आप खुद ही बताइए मेरे को, कोई एक आपका बड़ा स्प्रिंग है, ठीक है? कोई आपके पास एक L लेंथ का स्प्रिंग है और सेम मटेरियल का एक L/3 लेंथ का स्प्रिंग, और दोनों को सपोज मान लीजिए आप एक्स अमाउंट स्ट्रेच करेंगे। एक्स अमाउंट स्ट्रेच मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या लिखोगे आप? अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट बाय 2 देन स्ट्रेचिंग x by x का स्क्वायर, x स्क्वायर होना चाहिए, राइट? यानी वर्क डन बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक k and x स्क्वायर, k and x। अगर सेम आपका मटेरियल सेम है, अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग सेम है, तो किसके ऊपर डिपेंड है आपका? k। जो छोटा स्प्रिंग में आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा या बड़े को ज्यादा करना पड़ेगा? According to formula, k proportional to 1 by length, more work done for smaller length. More work done for smaller length. हाँ, आप खुद सोचिए ना, मतलब आप खुद ही सोचिए, एक छोटा स्प्रिंग है उसको एक्स अमाउंट स्ट्रेच करेंगे और एक आपका बड़ा स्प्रिंग है उसको एक्स अमाउंट स्ट्रेच करेंगे, किसमें आपको इजीली आप स्ट्रेच कर सकते हो? छोटा को इजीली एक्स अमाउंट स्ट्रेच कर सकते हो या कोई बड़ा स्प्रिंग है उसको इजीली स्ट्रेच? बड़े को है ना? यानी बड़े का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? वो आपका कम है और छोटा का स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली ज्यादा है। तो that's what I'm saying, spring constant basically inversely proportional to length. So it is by practical experience. Exactly, practical as well as theoretical. Okay. How by theory can say work done is not same na in both case? How can you? Work done same. Work done तो same नहीं है ना, तो proportionality formula से कैसे लिख सकते हैं? तो practically समझ में आया, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना, proportionality लिखने के लिए दो quantity same। तो work done देखिए ना, आपका work done proportional to क्या है? आपका K है, राइट? यानी दोनों के लिए आपका डिफरेंट आपका वर्क डन है, राइट? वर्क डन ये ज्यादा होगा तो बेसिकली आपका K प्राइम आपका ज्यादा होगा। यानी K अगर आपको लेंथ आपका स्मॉल है तो ऑब्वियसली इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपका ज्यादा होगा, ठीक है? एंड हाँ जी पुनीत बोलो। Sir, there is a student, she can't speak or understand Hindi, so can you please speak in English for her? What I'm saying that for a given material, theoretical as well as experimentally, it is fact that spring constant is inversely proportional to length. है ना? So how will explain that? Because if you have a small spring and you have a big spring for the same material, है ना, small length and large length, it's easy to stretch, है ना? It's very easy to stretch the large length spring. है ना? You have a same material spring on a small and another is large. So the amount of work done will be different if you stretch same amount of stretching for both spring. Okay, why? Because basically that work done basically depends upon spring constant. So if you have a small spring, then spring constant of small spring will be basically greater than larger spring. Basically it is fact that spring constant is inversely proportional to length. Okay, so jiska the spring having large length will have small spring constant. That's why it's very easy to stretch, or amount of work done will be small for a large length spring if you stretch it further. But if you have small length spring, it's very hard to stretch, or amount of work done will be large because of large spring constant.
And basically this is the formula to know the spring constant, how it is related to length. So obviously here that if you have a spring here, the spring constant is k. For each part you have divided into 3 parts, right? So obviously for each part the spring constant will be how much? Here it will be 3k. Here it will be 3k. Why, sir, it will be inversely proportional, actually. Okay. That's what I'm saying. You have a here you can write, right? So in first equation you can write k, that is inversely proportional to L. This is your first equation. And for if you take this, suppose you don't know that spring constant. So let us take this. So this will you can write k prime, that is 1 by L by 3. So suppose this is your equation number 2. You are calculating that spring constant of this. You have assumed that is k prime. So k prime will be inversely proportional to L by 3. Now if you divide equation 2 by 1, so how much you will get? K prime by k, that will be how much? That will be kitna aa jayega? K prime by k, that will be 3 by L divided by L by 2. So that will be 3. So k prime equals to 3k. And similarly, you can calculate for each. Here I have made simple. I have taken equal part. But if you distribute divide into different length, suppose you are dividing into 2 parts. One is like 2L by 3, another is L by 3. You can calculate the spring constant of new spring just by using its length. Sir? Yes, tell me. Sir, k is inversely proportional to its length is applicable to all the conditions. Here I am saying if you have a irrespective of what. if you have a same material spring. Yes, sir. If you have the spring having same material, then spring constant is always inversely proportional to length. Okay, for same material. For same material. Okay, yes, sir. Okay. Now, if I give another example, suppose you have a solid sphere. You have a solid sphere. Can you please try this question? Say a good question actually. You have a solid sphere. The mass of the sphere is m, radius is r. Okay, and this the center of this solid sphere is connected to spring, attached to spring, and this solid sphere is actually executing simple harmonic motion without slipping. Okay, so you have a spring having spring constant k. Again, I'm repeating, you have a spring that is attached with solid sphere, center of solid sphere. This solid sphere is executing simple harmonic motion without slipping. So you have to calculate time period of oscillation of this solid sphere. So as you know, this is actually executing simple harmonic motion. But remember, this solid sphere is actually not slipping. It's executing simple harmonic motion without slipping. Now you have to calculate the time period of oscillation of this body. Can you please try? So how will solve this problem? Is this problem clear to all, student? What I'm saying? Is this problem clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Can you please try? Yes, how will solve this? So half I omega square equal to half k x square. Half I omega square equals to half k x square. You don't know here that, you see, is equal to omega. क्या है देखिए, आपका हाफ के एक्स स्क्वायर भी वो क्या है, वो तो पोटेंशियल एनर्जी है. अब जैसे आपका यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है ना, moving without slipping. Sphere is here sphere is rotating. Exactly, rotating. So rotational kinetic energy is present. हाँ, तो जैसे आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई बॉडी में जब होती है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप ले लीजिए, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपका 2 तरह की एनर्जी होता है. एक तो आपका हाफ के एक्स स्क्वायर और एक आपका बेसिकली क्या होता है जी, आपका एक काइनेटिक एनर्जी पार्ट होता है. काइनेटिक एनर्जी पार्ट होता है, राइट. तो यहाँ पे भी सेम होगा. आप इक्वेट कब कर सकते हो, जब आपका सपोज मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन में चला गया. सपोज आपको पता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है दैट इज सपोज मान लो आपको गिवन है कैपिटल है, तो वहां पे आप इक्वेट कर सकते हो कि हाफ के कैपिटल ए स्क्वायर यानी पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी कंपेरेबल विद काइनेटिक एनर्जी, व्हाटएवर काइनेटिक एनर्जी इट इज.
बट यहाँ पे तो वो गिवन नहीं ना. Is it clear, student, what I'm saying? He is comparing that potential energy with kinetic energy. But potential energy, kinetic energy कब comparable होगा? हाँ जी, समझ में नहीं आया? नहीं सर ये सॉलिड स्फीयर आपने दे रखा है प्रॉब्लम में. सॉलिड Exactly, स्फीयर. it's a solid sphere. It is a solid sphere having radius r and mass is m. It is rotating also, or it is only doing. It is executing simple harmonic motion without slipping. तो जब भी आपका कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, टोटल एनर्जी आप लिखोगे. सपोज यू आर टेकिंग टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी में क्या क्या पार्ट आ जाएगा बताओ? टोटल एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा? स्प्रिंग के कारण क्या आएगा? टोटल एनर्जी अगर आप लिखेंगे स्प्रिंग के कारण कितना आ जाएगा जी? हाँ, that is the represent, that is the potential energy available with this spring, that is half k x square. ये आपका टोटल, this is the potential energy of your system. अब क्या है काइनेटिक एनर्जी पार्ट? तो एक तो आपका बॉडी का क्या हो रहा है, बेसिकली रोटेशन हो रहा है. तो रोटेशन में क्या होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज हाउ मच? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आता है जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये तो क्या है आपका रोटेशन के कारण. अब देखिए जब भी आपका ये सॉलिड स्फीयर का रोटेशन होगा, सेंटर ऑफ मास का क्या होगा बताओ? ट्रांसलेशन. तो सेंटर ऑफ मास का आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी लेना पड़ेगा. तो ये बड़ा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. आपका इवन एक क्वेश्चन यहाँ से आपका जो आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, उसके बेस पे आता है. जब भी कोई बॉडी का मोशन हो रहा है ना, विदाउट स्लीपिंग, तो वहां पे दो तरह के आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा. एक तो प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, और एक दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल एनर्जी available with the system. Sir, हाँ बताओ. सर, हाँ, velocity of center of mass, no? this is the velocity of center of mass. Velocity of center of mass का ट्रांसलेशनल मोशन होगा कि नहीं? हाँ बताइए जी. अगर सर ये स्फीयर सर ये अगर ये गोल नहीं घूमता तो ये हाफ एम बी स्क्वायर नहीं आता ना सर? अगर ये रोटेट नहीं करता तो? नहीं, रोटेशन के कारण तो ये वाला पार्ट आ रहा है ना. सॉरी सर. हाँ, रोटेशन के कारण कौन सा आ रहा है? ये वाला पार्ट आ रहा है ना. ये वाला सर पार्ट नहीं आएगा ना सर? हाँ जी सर कैन यू ये सेकंड वाला सर पार्ट नहीं आएगा ना? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा ना सर? अगर रोटेशन ना होता तो ये वाला पार्ट नहीं आता. ठीक है. हाँ, someone is asking other Sir, can you please explain the problem? I think I have missed something, some word or some line. I think. Okay, what I'm saying, you have a spring. You have a spring that is attached with center of solid sphere having radius r, mass m, and this solid sphere is executing simple harmonic motion without slipping. Without slipping मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए? Without slipping का मतलब क्या है? रोटेशन हो रहा है, राइट? Yes. इसका रोटेशन हो रहा है, तो स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग के कारण काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? This is the, हाँ, this is the rotational, this is the kinetic energy due to rotation. और सेंटर ऑफ मास का क्या होगा आपका? ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा. वहाँ पे आपका हाफ एम. सर अगर स्लीपिंग होता तो? स्लीपिंग हो रहा होता तो? स्लीपिंग होता फिर आपका रोटेशन नहीं होता ना, फिर हाफ एम बी स्क्वायर आ जाता. रोटेट सर ऐसा नहीं हो सकता रोलिंग विद स्लीपिंग? रोलिंग विद स्लीपिंग? यस सर. तो रोलिंग विद स्लीपिंग में क्या आ जाएगा बताओ? मतलब कोई और टर्म? प्योर रोटेशन, वहां पे प्योर रोटेशन नहीं है, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. जैसे प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है तो फिर वहां पे हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर भी नहीं लिख सकते हो आप. अगर कोई बॉडी का प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है सपोज मान लो, तो फिर आप ये हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर कब होता है बताओ? रोटेशन के लिए? प्योर रोटेशन के लिए हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर आता है, राइट? अगर बॉडी का स्लीपिंग हो रहा है इसका मतलब क्या है? आपका प्योर रोटेशनल मोशन तो नहीं है. तो प्योर रोटेशनल मोशन नहीं है तो फिर आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी नहीं ले सकते हो, एंड दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. काइनेटिक एनर्जी पार्ट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा लिखने के लिए. जब प्योर रोटेशन नहीं है तो फिर आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकते हो. ये तो प्योर रोटेशन के लिए होता है. ओके ओके. दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. जब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, आधा रोटेशन है, एंड दैट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व. ओके तो प्रॉपर आपको ये देना पड़ेगा फिर इंफॉर्मेशन, कितना रोटेशन हो रहा है, कितना
ट्रांसलेशन मोशन हो रहा वो भी हम करेंगे. है. We can try that also. I'll try to make a problem on that. Okay sir. बट ये बोला क्लियर है ना जी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी पार्ट है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पार्ट है ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ स्ट्रिंग. ये प्योर रोटेशन के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है. और ये वाला पार्ट किसके लिए आ रहा है? सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. यस सर, क्लियर. हाँ, नाउ यू हैव अ हाफ k by 2 x स्क्वायर. आई कितना आएगा बताओ? 2/5 mr square. Exactly, it will be 2/5 mr square. और ओमेगा को क्या लिख सकते हो रोटेशनल मोशन के लिए? v by r का स्क्वायर. ओमेगा इक्वल्स टू क्या होती है? v by r होती है, राइट? बिकॉज v इक्वल्स टू व्हाट? ओमेगा r. सो ओमेगा को क्या लिख सकते हो? v by r का स्क्वायर एंड देन यू हैव m/2 v स्क्वायर. सो यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू कैन राइट k by 2 x स्क्वायर. ठीक है, देन ये वाला पार्ट ऐड कीजिए जरा, ये कैंसिल हो जाएगा. फिर क्या आ जाएगा यहाँ से बताइए? m/5 v स्क्वायर प्लस m/2 v स्क्वायर. 7/10 mv square. हाँ, so you'll have k by 2 x square plus 7/10 m v square. ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो आपका क्या आ गया? आपका एनर्जी आ जाए, आपका एनर्जी आ गया, टोटल एनर्जी ऑफ. आपको पता? हाँ जी, कोई डाउट है? एग्जैक्टली, you have to differentiate with respect to time because total energy जो होता है that is always constant. Total energy is always constant. Now if you differentiate d by dt, that will be 0. So if you differentiate, what will happen? So that will be differentiate करो k by 2 x का x स्क्वायर का करोगे फिर क्या आ जाएगा? k by 2 then 2x dx by dt क्या आ जाएगा? k by 2 then x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट पे, that will give you 2x then dx by dt. and similarly 7/10 then m v स्क्वायर का टाइम के रेस्पेक्ट पे करोगे फिर क्या आ जाएगा आपका? 2v then dv by dt. and that will be equals to 0. So down screen is not visible. Which on? So down. Down on. Yes. Okay, I'm writing here. You write it. So you have a E that is k by 2 x square, and then you have a kinetic energy part. If you add it, you will have 7/10 m v square. Okay, so you are differentiating. So x square का 2x, then dx by dt, then v square का 2v dv by dt. Okay, लिख लिया ना? Yes, sir. Now tell me, this 2 will be cancelled. So this will be kx dx by dt means what? v, right? Then 2 10 से cancel हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा. So you'll have 7/5 then mv dv by dt, that is your a, that is equals to 0. यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? v कॉमन आ जाएगा. So you have kx plus 7/5 ma, that is equals to 0. kx plus 7/5 ma equals to 0. So यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? What will you get? 5. Sir, 5k by 7 so you'll have get from here kx plus 7/5 ma, that is equals to 0, which implies that a will be how much? That will be 5k kx by 7 m. So last line पूर्ण sir, last line दिख नहीं दिख रहा है. So यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? देखो if you
So from here you will get acceleration, right? So acceleration can be written as what? You will have minus 5kx by 7m, and that will be how much? A क्या होता है आपका? Minus omega square x, right? A is how much? That is minus omega square x. आपको क्या निकालना था यहाँ पे? टाइम पीरियड निकालना था. तो यहाँ से आपका ओमेगा आ गया. कितना आ जाएगा ओमेगा? रूट ओवर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट 5k by 7m, and t is how much? T is nothing but 2 pi by omega. तो अगर ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो 2 pi then 7m by 5k. Two pi then 7m by 5k. So this is the time period of oscillation. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सपोज मान लीजिए इस तरह की आपका 2-3 बार आ चुकी है CSIR में, अगर आप देखेंगे तो, कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे कोई आपका स्फीयर है या सिलेंडर रखा हुआ है, और ये आपका h हाइट पर है, और ये चलना शुरू किया, दिस सिलेंडर और आपका सपोज मान लीजिए स्फीयर है, एंड दिस मूविंग दिस इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लीपिंग, है ना? तो फिर जब ये ग्राउंड पर आएंगे तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट बहुत आता है ये क्वेश्चन. सेम कॉन्सेप्ट में कर सकते हो. जैसे जब आपका ऊपर है तो इसका टोटल एनर्जी कितना है? mgh है, राइट? और जब चलना शुरू किया विदाउट आपका स्लीपिंग, यहाँ जब पहुंचेंगे तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा आपका? टोटल एनर्जी kinetic energy will be converted into potential energy. So mgh will be mgh, that will be equals to how much? Half I omega square plus half mv square. जब भी कोई बॉडी का स्लीपिंग रोटेशन हो रहा है विदाउट स्लीपिंग, तो वहां पे दो पार्ट आ जाएगा, दो काइनेटिक एनर्जी पार्ट आ जाएगा. ठीक है, आपका क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास के उसका रिगार्डिंग आ जाएगा एक पार्ट, और एक आपका प्योर रोटेशन का, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन देखना 2-3 बार आ चुका है CSIR. लेकिन यहाँ स्लीप नीचे जा रहा है, मतलब वो स्लीपिंग कर रहा है ना? स्लीपिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ रोटेशन हो रहा है. जैसे आप एक चौक को थ्रो कर दो, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं ना रोटेशन करके? प्योर नहीं जा सकता है? जा सकता है. हाँ, तो वही हो रहा है, रोटेशन होते होते जा रहा है. बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? जो पोटेंशियल एनर्जी जब पूरा हाइट पर था सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज कमिंग टू ग्राउंड. बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का 2 कंपोनेंट रहेगा, दैट इज द मेन थिंग, इसीलिए क्वेश्चन में आता है. एक आपका प्योर रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी, और एक आपका ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना? तो इसके रिगार्डिंग बहुत बार आ चुका है, तो ये वाला अब ये वाला आ सकता है इस तरह की प्रॉब्लम. तो मैंने यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लेके किया, अब वहां पे हॉलो दे सकता है या सिलेंडर लगा के कुछ दे सकता है. ठीक है, बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Now, as you know that you have a simple pendulum, that is also an example of simple harmonic motion, right? And suppose कोई एक simple pendulum है जिसका length L है, and this is O is the point of suspension, and this is the bob having mass m. You have a simple pendulum, this is the string having length L, mass is m. Okay, and this is actually suspended. Now, if you make small displacement theta, this is the mean position, you displace it by an amount theta. Theta is very, very small. Now it will undergo simple harmonic motion, but condition is that theta will be small. So this is basically simple pendulum, the example of simple harmonic motion. It can undergo simple harmonic motion if you disturb it by a small amount theta about its mean position, है ना? तो जब अब इसको थीटा में डिस्प्लेस करोगे तो बताओ यहाँ पे mg किधर काम करेगा? डाउनवर्ड सर.
Downward. So now if you extend this angle will be how much? Theta. Theta. mg cos theta. So this component will be what? mg cos theta. mg cos theta. Okay. So this is mg cos theta balancing with what? इधर क्या काम करेगा? Tension sir. Tension. और बताओ इधर एक फोर्स काम करेगा. That will be what? So this side you have mg cos theta. Obviously it will be mg sin mg sin theta sir. This will be mg sin Sin theta. theta. So because of this mg sin theta, because of this force mg sin theta, it will try to come back to mean position. And it will come back to mean position, but it will not stop here because of its inertia. So that force mg sin theta, that will be basically try to bring it back. Now you can basically explain sin theta. Sin theta को क्या लिख सकते हो आप बताओ? Theta minus theta cube. हाँ, suppose ये आपका x है, x amount डिस्प्लेस किया आपने. अब बताओ sin theta कितना आ जाएगा यहाँ पे? So theta equals to x by l. This length is how much? L. So this is a triangle, right? The triangle. This is basically what? x by l. So यहाँ पे sin theta कितना आ जाएगा? x by l by t sir. x by l आ जाएगा, right? क्यों x by l आएगा बताओ जी? पुनीत बताओ क्यों x by l आ जाएगा? सर क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसमें. हाँ तो थीटा स्मॉल sin theta equals to theta एंड सर एक आर्क प्रोड्यूस हो रहा है. हाँ, so यहाँ पे बेसिकली sin theta क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा. And there theta will be what? That will be theta will be what? This is x by l. तो वहां से आपका x by l आ जाएगा. So mg then x by l. But you have to take minus sign here. Why? Restoring force. Because your displacement along if the displacement is along this direction, then force is acting in which direction? That is opposite of displacement. So that's why to represent, because x is along positive direction, then force is actually acting opposite to that displacement. That's why you have to take minus sign. So this is the force that is trying to bring back to the system to the equilibrium position. So this is a force, and you can see that force is proportional to displacement, right? So this is basically example of simple harmonic motion. But this will undergo simple harmonic motion. जब कब simple harmonic motion होगा? जब आपका theta बहुत small होगा. If theta is small, then it will undergo simple harmonic motion. Because for theta, small theta, sin theta will be theta, and theta you can explain x by l. So f will be minus mg x by l, and that f is basically what? This is basically this is basically ma. So यहाँ से m cancel हो जाएगा और यहाँ से आपको basically क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, that is minus g by l x, and that can be written as omega square x. और यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा. ओमेगा कितना आ जाएगा? रूट ओवर g by l. तो रूट ओवर g by l means what? t equals to what? 2 pi root over l by g. So this is the time period of oscillation of simple pendulum. Okay, when you displace that simple pendulum by a small, very small. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो. So again, down screen is not visible. इतना दिख रहा है? Yes, sir. तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना है बताओ? ओमेगा स्क्वायर कितना है? If you compare, that will be g by l, right? It means omega is how much? That will be square root g by l. और t equals to क्या होता है? 2 pi by omega होती है. And omega is how much? G by l. So that will be 2 pi square root of l by g. So this is the time period of oscillation of simple pendulum. If you disturb that simple pendulum by a very small angle theta, it will execute simple harmonic motion. Okay. Now in the theta part. हाँ जी. So in the theta, that is minus mg s by l. हाँ. ये हो रहा है बोलिए तो क्लास ए में कैसे हो रहा है? So यहाँ पे प्रॉब्लम है आपका? हाँ सर, हाँ सर. हाँ, पहले साइन थीटा था, राइट? हाँ सर. साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा जब थीटा स्मॉल है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा सर. थीटा लिख सकते हो. हाँ सर. थीटा जब स्मॉल है, थीटा को क्या लिख सकते हो आप?
थीटा को आप tan थीटा भी लिख सकते हो। देखो जब थीटा बहुत स्मॉल है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हो आप जब स्मॉल थीटा है। अब देखो ये एक ट्रायंगल है आपका, यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है क्या है, लेंथ है, सॉरी परपेंडिकुलर है, बेस है, और ये हाइपोटेनस। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, सो x बाई l। और यहाँ पे माइनस क्यों लिया मैंने, माइनस इसीलिए लिया क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है, फोर्स किधर काम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट में काम करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंडा क्या है कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट में काम करेगा। So that's why I'm taking this minus sign. It has significance because force is acting opposite to that of displacement. That's why I'm taking minus sign. सर बोलो। ये जो माइनस साइन जो आपने जो दिया है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है या डिस्प्लेसमेंट की वजह से सर? देखो यहाँ पे आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जी सर। और डिस्प्लेसमेंट किधर है आप बताइए, जब इधर मूव किया डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ है ना। हाँ सर। और फोर्स किधर काम कर रहा है, वो भी सर लेफ्ट में काम कर रहा है। हाँ इसका कंपोनेंट mg का इधर काम करेगा ना फोर्स। mg का कंपोनेंट ले लो, एक तो mg कोसाइन थीटा आएगा और एक आपका mg साइन थीटा आएगा। mg साइन थीटा जी सर। दिस इज फोर्स एक्टिंग opposite to that of displacement. So displacement is this side and force is opposite to that of displacement. That's why I'm taking minus sign. तो ये हम सर ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बोल सकते थे? Exactly, that will be restoring force. Okay sir. ठीक है। So I think we'll stop here. Sir. बोलिए जी। Sir, in the beginning you have written that f equal to minus k x to the power n. So that is the general force equation for oscillation for all type of oscillation. For oscillatory motion, that is minus k x to the power n, and n can take odd number. It is for all type of oscillation. Oscillatory motion, yes. Okay, so why n equals to only n can take only odd number? That's yesterday we have discussed, na? And that is because that force is always act in the opposite direction of displacement. जैसे आपने पढ़ा कल ही डिस्कस किया था, सपोज आपका मेन पोजीशन है, ओरिजिन है, और आपने x अमाउंट डिस्प्लेस किया आपने, ठीक है ना। सो f क्या होगा आपका माइनस k x दी पावर n। तो आपने समझ मान लो पॉजिटिव की तरफ मूव किया, इसका मतलब क्या है आपका, दैट विल बी प्लस x दी पावर n। और n आपको ऑड ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में कंडीशन नहीं है कि आपका डिस्प्लेस फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट पे काम करेगा। अगर पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट किया आपने तो फोर्स किधर काम करेगा, इधर काम करेगा। सो यहाँ पे पॉजिटिव x दी पावर n, दैट विल गिव यू माइनस k x दी पावर n अगेन। Okay, so to make odd function. हाँ देखिए ना, हाँ अब सपोज मान लीजिए ओरिजिन से आपने लेफ्ट की तरफ मूव किया तो आपका के यहाँ पे माइनस x दी पावर n, और आपको ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, हमेशा जो आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में काम करेगा। इधर आप नेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस किया तो फोर्स किधर काम करना पड़ेगा, और हाउ इन व्हिच डायरेक्शन फोर्स विल एक्ट, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो टू शो दैट इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का कब आएगा, जब आपका n ऑड, n equals to even, नहीं n ऑड होता भी आएगा, देखो ना, odd. That's why you are restricted to take n odd, because n is showing significant, that will show that force will always act in the opposite direction of displacement of the body for oscillatory motion. So that's why you are restricted to take that n is odd number. Okay sir, okay. And simple harmonic motion is the simplest case, just you have to take n equals to 1. Why it is the simplest case? अगर आप large n लोगे, n equals to 3, 5, 7, है ना, so then again you will get differential equation, but that differential equation will not be simple to solve. It's very difficult to solve. No, would be not be linear, non-linear. Exactly, that will be non-linear case. Okay, I think you have familiar with this term, non-linear Yes, non-linear dynamics. Yes sir. Simple harmonic motion is actually simplest case. It will be easily solvable. Okay, so I'll stop. We'll solve few problem and we'll go to damped harmonic oscillation. Okay, the next class. So we'll stop here. Okay, thank you sir. Thank you sir.